हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिकिट। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं पहले से ही आप लोग को 2 लेक्चर दे चुका हूँ ऑप्टिक्स के ऊपर, दैट इज क्रैश कोर्स ऑन ऑप्टिक्स फॉर कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2023 फॉर ऑल ओडिशा यूनिवर्सिटीज। एंड आज मैं देने वाला हूँ लेक्चर नंबर 3, थर्ड लेक्चरर on ray optics, and I am Siddharth, your physics educator। आज मैं लेक्चर देने वाला हूँ सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आ चुका है रे ऑप्टिक्स से इन कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आज का क्लास सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही होगा, सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर होगा आज का क्वेश्चन, आज का क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन, चलो आज का पहला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस इज गिवन बाय, पावर ऑफ ए लेंस इज गिवन बाय, एक लेंस का पावर इज गिवन बाय ऑप्शन ए 100 f in 100 upon f in centimeter, and question number B 100 upon f in meter, and C में 300 upon f in centimeter, and D में 300 upon f in meter. So power of a lens is given by, एक लेंस का पावर क्या है? हमको पता है कि पावर P is equal to 1 by f in meter। अगर f is in meter, then 1 meter is equal to 100 centimeter. So power P is equal to 100 upon f in centimeter. So option A is the correct answer। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसके आगे what is the next? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, ए लेंस का पावर का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज मीटर, ऑप्शन सी इज डायोप्टर, ऑप्शन सी इज डायोप्टर, ऑप्शन डी इज none of this, none of this। So option C is the right answer। Power of a lens is denoted by diopter। Next, most important questions, rainbows,
are formed by rainbows are formed by। ये क्वेश्चन भी पहले से ही पूछ के रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। दिस इज द PYQ क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द ईयर 2021। 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था। रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फेनोमेना। 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था और इसका पहला ऑप्शन इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी इज refraction। Option B is refraction and scattering। Reflection and scattering। And option C is dispersion and total internal reflection। Dispersion and total internal reflection। And option D is interference only। Interference only। So dispersion and total internal reflection is the right answer। रेनबो क्यों क्रिएट होता है? रेनबोज आर formed by only dispersions। dispersions के माध्यम से ही रेनबो उत्पन्न होता है और किसके माध्यम से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की माध्यम से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सियल पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3। the axial points having unit positive linear magnification। unit positive linear magnification एक एक्सियल पॉइंट है जहां पे पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन है। उस पॉइंट में लीनियर एक यूनिट पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन है। कहां पे है? इन ए लेंस सिस्टम। इन ए लेंस सिस्टम इज कॉल्ड एज। पॉइंट को हम क्या कहलाएंगे? इज कॉल्ड as A is focal point, B is nodal points, and option C is principal points, and option D is centers of curvature। So option C is the right answer। The axial points having unit positive linear magnification in a lens system is called as principal points। इसका थियोरी बहुत बड़ा है, इसको बताने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है, तो इस टाइम सिर्फ हम क्वेश्चन के ऊपर ही ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम सर पर है, बहुत पास आ चुका है एग्जाम। जून 23 में होगा, जून 23 से स्टार्ट होगा, तो इसलिए हमको सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pair of conjugate points pair of conjugate points
pair of conjugate points, a pair of conjugate points on the axis of a lens, on the axis of a lens, on the axis of a lens, having the axis of a lens having unit positive charge, having unit positive charge, sorry, having unit positive angular magnification, sorry, having unit positive angular magnification, angular magnification, angular magnification वहां पे था, क्या था, linear magnification and the axial point, then the point is known as principal points. Here a pair of conjugate points, दो ही point है, pair of conjugate points on the axis of a lens, एक lens की axis के ऊपर a pair of conjugate points, दो ही point है, having unit positive angular magnification, वहां पे linear magnification था, यहाँ पे angular magnification है. Angular magnification are known as option A is principal points, option B is focal points, and option C is nodal points, option D is center of curvature, यहाँ पे क्या आ जाएगा, nodal points, a pair of conjugate points on the axis of a lens having unit positive angular magnification and the point is nodal points. Here is the linear magnification and the point is principal points. Next question is cardinal points of a lens of a power system cover. So the next question is हमारा 4 question. Next question होगा हमारा 5. Question number 5. पांचवा question. A pair of conjugate cardinal points of a lens system, एक लेंस सिस्टम का कार्डिनल पॉइंट्स इसको कवर करता है. कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ सिस्टम कवर. Option A is only two focal points, only two focal points. Option B is only two principal points, only two principal points, and option C is only two nodal points, and option D is two focal points, two principal points, and two nodal points, So here is the right answer is option D. Cardinal points of a system cover two focal points, also two focal points, also two principal points, and also two nodal points.
जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा और एक वीडियो के माध्यम से। तो बताइए, the achromatic condition for two lenses of focal length f1 and f2 separated by distance b is the achromatic condition. The achromatic condition for दो लेंस के लिए achromatic condition क्या होगा? उन दोनों लेंस का फोकल लेंथ क्या आ जाएगा? दैट इज f1 and f2 and this f1 and f2 are separated by distance d. Two lenses of focal lengths of a focal lengths f1 and f2, and they are separated by distance d is distance they are separated by distance d is, so what is the achromatic condition for लेंस के लिए? वो दोनों लेंस के लिए एक्रोमेटिक कंडीशन क्या आ जाएगा? उन दोनों का फोकल लेंस का फोकल लेंथ that is f1 and f2 and the lengths are separated by distance d. So what is the achromatic condition? Option A is f1 plus f2 and option B is f1 minus f2 and option C is f1 plus f2 upon 2 and option D is f1 minus f2 upon 2. So it is the right answer is f1 plus f2 upon 2. This is the right answer for achromatic condition. This is the very most important questions from optics, geometrical optics. What is the achromatic condition for two lenses of focal lengths f1 and f2 and they are separated by distance d is, that is f1 plus f2 upon 2. This is the most important questions from geometrical optics. एक है achromatic condition and the another question is of इस टाइप का another question is what is the condition for spherical aberrations. एक है achromatic condition and एक है spherical aberrations. condition for minimum spherical aberration for two thin lenses of focal lengths of focal lengths f1 and f2 separated by distance d is that is option A is d is equal to f1 plus f2. Option B is d is equal to f1 minus f2. And option C is d is equal to f1 into f2. And option D is d is equal to f1 plus f2 upon 2. So condition for minimum spherical aberrations वहां पे था achromatic conditions. achromatic condition के लिए f1 plus f2 upon 2 and for minimum spherical aberrations के लिए d is equal to f1 minus f2 is equal to f1 minus f2 is the right answers. Next questions.
condition of achromatism and minimum spherical aberration are fully satisfied. क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा है? achromatic condition, thin lens का दो ही condition है, one is achromatic condition and another is spherical aberrations. So क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है कि उन दोनों कंडीशन कौन सी लेंस पे है और फुल्ली सेटिस्फाइड है, कौन सी आईपीस लेंस में है. सो द कंडीशन of achromatism and minimum spherical aberration and minimum spherical aberration are fully satisfied in dash. Option A is Ramsden's eyepiece, option B is Huygens eyepiece, option C is both Ramsden's, option D is none. So Huygens eyepiece is the right answer. उन दोनों कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है? एक्रोमेटिज्म एंड मिनिमम स्फेरिकल एबरेशन इन Huygens eyepiece. Huygens eyepiece में एक्रोमेटिज्म एंड मिनिमम स्फेरिकल एबरेशंस आर फुल्ली सेटिस्फाइड. Next, question number 9. Next is question number 9. The Ramsden's eyepiece consists of two planar convex lens of focal length. ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, आप लोग अभी +3 क्लास में ही डिटेल में ही पढ़ चुके हैं. Ramsden's eyepiece, Huygens eyepiece in geometrical optics. उन सब थ्योरी को इस टाइम पे पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है. आईपीस में आप लोग पढ़ चुके हैं, Huygens eyepiece एंड Ramsden's eyepice में ये सब आप पढ़ चुके होंगे. तो देखते हैं कि कंडीशन सॉरी ये तो जा चुका है क्वेश्चन नंबर 8 में. ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is the Ramsden's eyepiece. The Ramsden's eyepice consists of two planar convex lens of focal length So option A is F each. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि the Ramsden's eyepiece consists of Ramsden's eyepice consist कर रहा है of two planar convex lens. वो दोनों planar convex lens को लेकर वो consist कर रहा है of focal length. उन दोनों planar convex lens का focal length क्या होगा? F in each lens का focal length F होगा
और डिफरेंट फोकल लेंथ डिफरेंट होगा, डिफरेंट हो जाएगा, और मे बी इक्वल और डिफरेंट, मे बी इक्वल और डिफरेंट. ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस, नॉन. तो क्या जाएगा आंसर, दैट इज एफ इन इच. टंगस्टन आईपीस में टू प्लानर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है, एफ इन इच प्लानर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ इज एफ. क्वेश्चन नंबर 10. If focal length of eye lens in Ramstein's eyepiece, if focal length of eye lens, if focal length of eye lens in Ramstein's eyepiece, Ramstein's eyepiece में आई लेंस का फोकल लेंथ अगर f हो गया, Ramstein's eyepiece is f, then separation between two lens is, then separation between two lens is. अगर Ramstein's eyepiece का फोकल लेंथ, उस आई लेंस का फोकल लेंथ हमारा f हो गया, then what is the separation distance between the two lens? तो एक है आई लेंस, एक है ऑब्जेक्ट लेंस. तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? The separation between the two lens is, that is option A is f, option B is 2/3f, option C is 2f, and option D is 3f. So 2/3f is the correct answer. Question number 11. If a focal length of eye lens of Hygien's eyepiece is f, अगर Hygien's eyepiece का focal length अगर f हो गया, then focal length of the field lens का focal length and the separation distance between the two lens, field lens and eye lens का separation distance. वहां पे पूछ रहा था हमको Ramstein's eyepiece में, यहाँ पे पूछ रहा है हमको Hygien's eyepiece में. If the focal length of eye lens of Hygien's eyepiece is f, Hygien's eyepiece में आई लेंस का फोकल लेंथ अगर f हो गया, then what is the focal length of the field lens, then what is the focal length of field lens, then what is the focal length of field lens का फोकल लेंथ क्या होगा, field lens and at the separation between two lens, that is 3f, 2f, and option D is f 2/3f, option C is 2f 3f,
Option D is 3f f. So here 3f and 2f is the correct answer. Next question number 12. The equivalent focal length of hygiene's eyepiece if focal length of eye lens is f. So what is the equivalent focal length of hygiene's eyepiece the equivalent focal length of a hygiene's eyepiece. एक hygiene's eyepiece का equivalent focal length क्या आ जाएगा? eyepiece if focal length of eye lens if the focal length of eye lens is f is option A is 2/3 f. Option B is 3/2 f. Option C is f/3. Option D is 2f. So 3/2 is the 3/2f is the right answer. Equivalent focal length of a hygiene's eyepiece. डेड मोशन का क्वेश्चन हम पहले से ही वेव की चैप्टर में जो पढ़े थे पहले से ही वहाँ पे हम वेव्स क्या क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं. अब देखते हैं सुपरपोजिशंस ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक मोशंस. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वहाँ उसको हम देख लेंगे. So what is the differential equation of simple harmonic motion? What is the differential equation of a simple harmonic motion? था क्वेश्चन नंबर 12 गया. अब आया क्वेश्चन नंबर 13. What is the differential equation of SHM? Differential equation of SHM. Simple harmonic motion का differential equation that is d square x upon dt square minus omega square x is equal to 0. Next is d square x upon dt square minus omega square upon x is equal to 0. The option C is d square x by dt square minus omega square x is equal to 0. And option D is d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. So what is the correct answer? That is d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. This is the right answer. Velocity of light in any medium is expressed as, very important questions. Velocity of light in any medium is expressed as, is option A 1 by u naught epsilon naught double mu naught epsilon naught, and option B is 1 by root over mu epsilon
and option C is root over mu upon absolute. Option D is root over mu naught upon absolute naught. So what is the right answer? Right answer is 1 by root over mu upon absolute. What is the shape of a wavefront originating from a linear source of light? अगर एक वेवफ्रंट ओरिजिनेट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट, लीनियर सोर्स ऑफ लाइट से एक वेवफ्रंट ओरिजिनेट होता है और क्रिएट होता है. Then the shape of the wavefront. What is the shape of a wavefront originating from a linear source of light? वेवफ्रंट की शेप ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लीनियर सोर्स से वो ओरिजिनेट होता है. देन उसका शेप क्या आ जाएगा? दिस शेप इज सिलिंड्रिकल. वेवफ्रंट का शेप आ जाएगा cylindrical. If the wavefront is originated from a point source of light, अगर वो wavefront point source से originate होता है, then what is the shape of the wavefront is spherical. Spherical. If the wavefront is originated of a beam of parallel rays, then the shape is plane. So what is the shape of a wavefront? अगर वो ओरिजिनेट होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक लीनियर सोर्स से. Then the shape of the wavefront is cylindrical. If what is the shape of the wavefront? Whether it is originated from a point source, then the shape of the wavefront is spherical. And what is the shape of the wavefront? While it is originated from a beam of parallel rays, then the shape is a plane. The shape of a wavefront converging beam of light. नेक्स्ट क्या आ जाएगा? converging beam of light. converging beam of light. That is for convex lens के लिए. converging means convex और diverging means concave. So for convex lens के लिए shape of a wavefront is spherical. And for diverging means concave lens के लिए the shape of the wavefront is also spherical. So converging beam के लिए spherical और diverging beam के लिए भी spherical. Next आता है relation between the coherent length, coherent time and velocity c. The relation between coherent light that is L, coherent time that is tau, and velocity of light c is
is A is equal to L is equal to tau on C, and B is L is equal to C by tau, and C L is equal to tau C. The option D is none of these. So what is the right answer? The correct option is C. L is equal to tau C. और एक क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर E is the, अगर E and B, अगर E and B are the electric and magnetic field vectors. ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स. Then in the direction of propagation of electromagnetic waves, direction of propagation of electromagnetic waves is along the direction, the direction is option A is only B के डायरेक्शन में होगा और B के डायरेक्शन में होगा, और ऑप्शन C is E cross B. The option D is none of these. So E cross B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इंटरफेरेंस. यहाँ पे यंग्स इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है. कहाँ से? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से. सो और एक क्वेश्चन है, न्यूटन्स रिंग are tests. Newton's rings are option A is circular, option B is parabolic, option C is hyperbolic, and option D is none. So Newton's rings are circular in nature. So थोड़ा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं इसका क्वेश्चन करने से पहले. व्हाट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो इंटरफेरेंस पहले हमको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही पता चला है. अबाउट इंटरफेरेंस पहले हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही इंटरफेरेंस का फेनोमेनन को जान चुके हैं. सो थॉमस यंग इन 1801 demonstrated the phenomenon of interference of light using the principle of superposition. सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल को यूज करके ही वो इस फेनोमेनन को क्रिएट कर चुके हैं, और वो फेनोमेनन को, वो एक्सपेरिमेंट को ही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम कह चुके हैं. सो व्हाट इज द प्रोसेस? Here we have to take two slits S1 and S2. ये दोनों स्लिट्स है, स्लिट्स. नेक्स्ट एक स्क्रीन है, वहां से लाइट सोर्स P में आके इंटरफेरेंस होता है, एंड फ्रॉम S2 से ही वही P से ही होता है.
is in O, ये है A, ये है B. So S1 and S2 का बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, स्क्रीन एंड स्लिट का डिस्टेंस है कैपिटल D, S1 से P का डिस्टेंस है x, S2 से P का डिस्टेंस है x प्लस डेल्टा x, और ये बीच का डिस्टेंस है d/2, ये हो गया हमारा d/2. So according to the Young's double slit experiment, इस थ्योरी को पूरी तरह तो अभी डिस्कस करने के लिए और पूरा थ्योरी को समझाने के लिए अभी तो वक्त नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में ही समझा देता हूँ. सो ये हो गया हमारा पूरा फिगर, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फिगर. ये है लाइट सोर्स, पी पॉइंट से लाइट्स एस से निकाल के पी से ही इंटर रिफ्लेक्ट होगा. यहाँ पे स्क्रीन के पी पॉइंट के ऊपर वो इंटरफेयर होगा. देन S2 से ही वही पी पॉइंट से जाके इंटरफेयर होगा. देन S1 से P का डिस्टेंस है x, S2 से डिस्टेंस है x प्लस डेल्टा x हो गया. देन व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहाँ पे दो तरह का इंटरफेरेंस आ जाएगा, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड अनदर इज डिस्ट्रक्टिव. सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए phi is equal to 2n pi. So what is phi? Phi is the phase difference is phi. So phase difference phi is 2n pi. So phi is equal to 2 pi lambda upon delta x. Phi का वैल्यू है 2 pi by lambda into delta x. Then the interference maximum is directly proportional to R1 plus R2 का square. And what is the destructive interference? For destructive interference यहाँ पे cos phi आ जाएगा 1, cos phi is equal to 1, यहाँ पे cos phi is equal to -1, and 2 pi by lambda और डेल्टा x, यहाँ पे डेल्टा x कितना आ जाएगा, डेल्टा x is equal to phi into lambda by 2 pi. यहाँ पे डेल्टा x कितना आ जाएगा 2n plus 1 into lambda by 2, and the interference minimum is directly proportional to R1 minus R2 का square. नेक्स्ट आ जाएगा इसका फ्रिंज विड्थ, that is beta is equal to lambda, that is wavelength. Capital D is the distance between screen and slit upon small d, where small d is the distance between two slits. दो slits का बीच का डिस्टेंस है स्मॉल d, एंड स्क्रीन एंड स्लिट का डिस्टेंस है कैपिटल D. This is the bright fringes. ये है bright fringes. And for dark fringes, angular fringe width, that is theta, is equal to beta by capital D is equal to lambda by small d. This is called as angular fringe width. Angular fringe width. Angular fringe width, that is beta upon d is equal to lambda by d.
तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चंस, स्लाइड खत्म हो गया मेरा, सो अभी कुछ स्लाइड्स मुझे ऐड करना पड़ेगा, सो थोड़ा वेट कीजिए। हो गया, स्लाइड्स ऐड हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल फिजिकिट को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिजिकिट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है सीपीटी में, इस टाइप का क्वेश्चन, दैट इज द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, light of wavelength it is equal to light of wavelength lambda is equal to 5000 angstrom। तो क्या पूछ रहा है, in a Young's double slit experiment, light of wavelength 5000 angstrom is used to get an interference pattern on a screen. Interference pattern on a screen. So the fringe width changes by 2.5 mm. Then the fringe width changes by 2.5 mm when the screen towards the double slit by 100 centimeter. When the screen towards the double slit by 100 centimeter, and find the distance between two slits. Then find the distance between two slits. So यहाँ पे आंसर करेंगे। So in a Young's double slit experiment, Young's double slit experiment में light of wavelength 5000 angstrom, that is 5000 into 10 to the power minus 10 meter. So that is 5 into 10 to the power minus 7. 5 into 10 to the power minus 7 meter. To get an interference pattern on a screen के ऊपर एक इंटरफेरेंस का पैटर्न को पाने के लिए फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय, फ्रिंज विड्थ कितना चेंज हो जाता है, फ्रिंज विड्थ चेंजेस बाय, that is beta is equal to 2.5 mm, that is 2.5 into 10 to the power minus 3
M. When the screen towards the double slit by 100 centimeter. When the screen towards the double slit. So इस सेंटेंस में हमको ये जान लेने के लिए जान लेना चाहिए कि the distance between the screen and the slit is capital D is equal to 100 centimeter, that is 1 meter. Find the distance between two slit. So ये हमको पूछ रहा है what is the small d, then we know that beta is equal to lambda capital D upon small d. Then d is equal to lambda d by beta is equal to 5. लैम्बडा का वैल्यू क्या है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1 और बीटा का वैल्यू क्या है दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू इसको सॉल्व करने के बाद हमको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर मिल जाएगा. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स का बिटवीन का डिस्टेंस ये है. और अनदर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में. चलो और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ. दैट क्वेश्चन इज इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट in Young's double slit experiment, the angular width of interference fringes, the angular width of interference the angular width of interference fringes is 0.20 degree for sodium light of wavelength 5890 angstrom. For what value of wavelength this width will be more than 0.22 degree. For what value of wavelength this width will be more than 0.22 degree. So option A is 6479 angstrom. Option B is 6581 angstrom. Option C is 5875 angstrom. Option D is 7845 angstrom.
So in Young's double slit experiment, the angular width, that is theta, is equal to, यहाँ पे हमने पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ, थीटा इज इक्वल टू बीटा बाय कैपिटल डी और लैम्बडा बाय डी. So theta is directly proportional to the lambda. So lambda 1 by lambda 2 is equal to theta 1 by theta 2, or implies theta 2 by theta 1 is equal to lambda 2 by lambda 1, or implies lambda 2 is equal to theta 2 into lambda 1 by theta 1 is equal to 5890 into 0.22 divided by 0.20 is equal to 6479 angstrom. इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा हमारा. सो ये था हमारा पूरा क्लास ऑन, इसके ऊपर था हमारा पूरा क्लास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह देता हूँ कि माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर वाज ओरिजिनली डिजाइन्ड टू टेस्ट द एक्जिस्टेंस ऑफ मैटर ऑन अर्थ, the existence of absolute space, the existence of earth itself, and none of this. The correct answer is the existence of absolute space. The Michelson interferometer where mirrors M1 and M2. Michelson interferometer में दो ही मिरर यूज होता है. Where mirrors M1 and M2 are made slightly inclined, the fringes obtained are straight. वहाँ पे जो फ्रिंजेस ऑब्टेन होगा वो स्ट्रेट होगा. The visibility of fringes in Fabry-Perot interferometers is a function of only coefficient of absorption, coefficient of friction, coefficient of restitution, and coefficient of reflections. Here is the correct answer is the coefficient of reflections. चलो आज इस पार्टिकुलर सेशन को हम यही खत्म करते हैं. आज इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं. सो क्लास क्लोज करने से पहले मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोगों की फ्रेंड्स के सर्कल में. जो स्टूडेंट्स सीपीटी देने के लिए चाह रही है उनके लिए बहुत बेहतर होगा और बहुत बेनिफिट भी होगा. एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फिजिकिट को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स.